तो चलिए एक क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस करते हैं, हाउ दिस ऑल द पैरामीटर्स विच वी हैव सीन, और जो भी हमने वहाँ पर पिछले वीडियो में पढ़ा रिगार्डिंग विद द डिस्क एक्सेस टाइम एंड ऑल। सो इस क्वेश्चन की मदद से वो सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो यहाँ पर सरफेसेस मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए, दैट इज 16 ट्रैक्स और सरफेस इज गिवन, दैट इज 128 सेक्टर्स और ट्रैक वी कॉल्ड दैट इट इज गिवन एज 256 डेटा और सेक्टर इज विच गिवन एज द 512 बाइट एंड रोटेशन इज गिवन दैट इज द 3600 आरपीएम। और हमें फाइंड करना है डिस्क कैपेसिटी, सेकेंड नंबर ऑफ बिट्स टू एड्रेस सेक्टर, एंड थर्ड इज द डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ द डिस्क कैसे हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ द डिस्क एज वी हैव सीन अबाउट द फॉर्मूला दैट रिगार्डिंग, सो सरफेस यहाँ पर दिए गए दैट इज द 16, देन ट्रैक्स और सरफेस ट्रैक्स पर सरफेस हैज़ बीन गिवन हियर दैट इज द 128, दैट इज so 128 multiplied by, then sectors per track that is 256, then data per sector that is the 512 bytes. So after we convert this into the power of the 2, so 2 raised to 4 that is 16, 2 raised to 7 128, 2 raised to 8 that is 256, or 2 raised to 9 that is 512. So after multiplying all this we get here that is 2 raised to 28 bytes. So 2 raised to 28 जो कि है 256 MB. So next हमें पूछा गया we have to find that is the number of the bits to address the sector. So number of bits required to address the sector, so that will be 16, which are the surfaces, multiplied by that is tracks per surface and multiplied by sectors per track. So after doing all that calculation, so we get here that is 2 raised to 4 into 2 raised to 7 into 2 raised to 8 which is equal to 2 raised to 19 sectors. So यहाँ पर जो 19 bits है, so that will be required to address the sector. तो नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है दैट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र रेट। सो डेटा ट्रांसफ़र रेट का जो फॉर्मूला था दैट इज़ नंबर ऑफ द हेड ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी ऑफ द वन ट्रैक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ हेड हमें यहाँ पर दिए गए दैट इज़ द 16 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी ऑफ द वन ट्रैक विच इज़ 256 into 512 bytes. So this we have taken from the as the given provided in the question, multiplied by that is 3600 रोटेशन इन 1 सेकेंड। सो इन 1 सेकेंड सो कितने रोटेशन होंगे, हमें जो 3600 क्वेश्चन में दिए गए दैट इज आरपीएम विच इज रोटेशन पर मिनट। सो पर सेकेंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60. सो आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन वी गेट हियर दैट इज 60 into 2 raised to 21 बाइट पर सेकेंड विच इज 120 Mbps.